हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनुप। दोस्तों, मैंने रेगे नाम का मराठी फिल्म देखा है Zee5 पर। बहुत पहले से देखने का मन था। इनफैक्ट आई थिंक मेरे कुछ व्यूवर्स ने भी खासकर मुझसे रिक्वेस्ट किया था इस फिल्म को देखकर रिव्यू करने के लिए। आई फाइनली फिनिश्ड वॉचिंग इट ऑन Zee5 एंड लेट मी टेल यू, इट्स ब्रिलियंट। इट्स ब्रिलियंट फॉर टू बिग रीजंस। वन इज the superb editing and the way in which the non-chronological event of storytelling has been adopted in this film. That is brilliant to watch, that you should see and experience to finally understand the magical way in which the story has been told in a non-chronological fashion. And the second one is to watch the brilliant acting. दोस्तों, let me first talk about the non-chronological order of storytelling pattern that has been adopted in the film. It reminded me of Quentin Tarantino's Pulp Fiction, क्योंकि Pulp Fiction में भी जो chronology of events है उसको break करके non-chronological events में rearrange करके उसको story के form में बना के प्रस्तुत किया फिल्म के तौर पर. इनफैक्ट उसका detailed review मैंने अपने चैनल पर किया था. Pulp Fiction का review आप जाकर देख सकते हो if you are interested. But even in Rege, that is the same thing that has been done. The chronology of events of the story has been broken. It has been rearranged into a non-chronological fashion, and the same has been presented in the form of a story and ultimately the film that is Rege. In fact, अगर आप देखोगे फिल्म का जो स्टोरी है, it's very simple. It's about this medical student who is enamored by the gangsters and their lifestyle and gets pulled into the whirlpool of criminal activities. And what happens when finally police officers pick him up and the other thugs, police officers who are encounter specialists, उसके बाद क्या होता है? It's a normal story. It's nothing out of the box, but it is the treatment of that story, the brilliant editing, and the way in which the story has been broken into parts and rearranged in non-chronological fashion that makes it for a brilliant watch. क्योंकि आप जब देखने चालू करोगे फिल्म, आपको पहले पता नहीं चलेगा exactly क्या हो रहा है, ये कहानी कहाँ जा रहा है, कौन विलन है, कौन हीरो है, what is really happening. So you will have to wait till the end of the event to understand how this chronology of events actually happened. And once when you understand that chronology of events, and when you see how brilliantly the director and the editor planned to give audience an experience of being transported from past to present, how scenes get flipped between past to present, it is brilliant direction and brilliant editing at work. बहुत बहुत मजा आया दोस्तों. इनफैक्ट वो एडिटिंग का मजा वो फ्लिपिंग में था. आप पास्ट का एक सीन देख रहे हो, द सीन एंड्स विथ लेट्स से अ डायलॉग, और वो डायलॉग को कनेक्ट करके दूसरा सीन चालू होता है, विच कुड बी अ सीन फ्रॉम द प्रेजेंट. So, although it is the previous scene was a scene from the past and the current scene is a scene from the present, that last dialogue links the two. So, पूरा almost पूरा film वैसे चलता है यार, and the way it has created a thread of continuity, it is bloody brilliant to watch. I'm telling you, it is bloody brilliant to watch. और अब acting की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, महेश मांजरेकर उनका जो कैरेक्टर का नाम है प्रदीप शर्मा, विच इज ऑफ कोर्स द नेम ऑफ अ रियल लाइफ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एंड ऑफ कोर्स देयर इज सचिन वजे विच इज आल्सो द नेम ऑफ अ रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर. सो ये जो रियल लाइफ पर्सनैलिटीज है उनका पर्टिकुलर पर्सोना लेके महेश मांजरेकर और पुष्कर हु प्ले सचिन वजे, इनका कैरेक्टर्स डिजाइन किया गया. Excellent acting by Mahesh Manjrekar, by Pushkar. There is Santosh Jubekar who plays one of the thugs. Superb acting. But the man who steals the show is आरो वेलानकर who plays अनिरुद्ध रेगे. सुपर्ब एक्टिंग. इनफैक्ट दोस्तों, वो सीक्वेंस जहाँ पर पुलिस इनको उठाया और उनको इंटरोगेट कर रहा है, ही स्ट्रिप्ड, ही इज इन हिज अंडरगारमेंट्स, चड्डी में वो, ही इज kneeling there, is sitting down there, is being tortured, is being interrogated. यार वो not tortured in the usual sense, but intimidation है. तो वो डर जो उनके चेहरे पर दिखता है, उनके बॉडी लैंग्वेज में जो दिखता है यार, सुपर्ब, वेरी वेल एक्टेड. एंड ऑफ कोर्स द एंड इज heartbreaking, but again that's the end that the director designed, and the way it ends with that dialogue 100 wala, oh, you just don't know how to react. Overall, a brilliant watch it, like I said, to see the brilliant editing, the non-chronological order of storytelling, and second one to see the brilliant acting. Of course, also the background score of the film is very very nice. I think Monty Sharma is the music director who provided the background score. So overall, a brilliant watch. I think about 2 hours of time you will be thoroughly entertained, primarily because of the non-chronological order of storytelling. So if you want to see something different as far as treatment goes, watch Rege. Zee5 पर available है, but the only minus point is फिल्म का सबटाइटल्स नहीं है. मुझे तो नहीं मिला यार मेरे Zee5 ऐप पर. अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मराठी इट कैन बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. ऑल्दो देयर आर अ फ्यू हिंदी डायलॉग्स इन बिटवीन, क्वाइट अ फ्यू इन फैक्ट, बट स्टिल I think if you don't understand Marathi, it will be little difficult for you to follow this film, but nevertheless still watch it because the treatment is wonderful visually to see.
That's it, dosto. Oh, before I go, how many stars? I'm going with 4 stars out of 5 for Reggae. Brilliant film, brilliant cinema. As usual, Marathi cinema producing very, very good films in this last few years that we have seen. Anyways, dosto, that's it from me for the moment. It is time for me to say tata.